friends, this is our day 2 of trek and it is for Valley of Flowers. फेस कर रहे हैं अपनी पहली रेनफॉल इस ट्रैक की और अपने तो फ्रेंड्स हमने अपना रेन किट निकाल ली है। मैंने अभी नीचे का रेन कवर नहीं पहना है और ऊपर का और बैक कवर लगा लिया है। सडनली एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी और काश बारिश हो जाए तो एक साथ, तो फिर बादल छटें और हमें अच्छे व्यू मिले। फ्रेंड्स अभी एक बहुत बड़ा वाटरफॉल एंड रिवर पड़ी है, साथ साथ बारिश भी हो रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है ऐसी ट्रैक अभी तक। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और मेरा चश्मा भी फॉगी हो गया है और मेरे फ्रेंड्स सब बिछड़ गए। दो फ्रेंड्स आगे हैं शायद और बाकी पीछे। तो मैं चले जा रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। फ्रॉम रेनॉक एडवेंचर्स। कितना रह गया है? बस 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर रह गया और कितने बजे लौटेंगे हम? 1-1.5 बजे हम लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा, बस वैली से, और जो भी नेचुरल है आपको वैली के अंदर मिल जाएगा। ओके। और वैली में देखना है पूरा वो फ्लावर्स के अंदर जाके कितनी बड़ी वैली है। वो हमारा वो वैली से आ गया है पुष्पावती रिवर और उससे आगे है वो टिपका ग्लेशियर। अप्रॉक्स कितने लोग होंगे टोटल सब मिला के, सब कैंपिंग के साथ? 500-600 समथिंग। ओके। The waterfall in the last 1 kilometer of trek. Freeze water. So friends, I am at waterfall just before the Valley of Flowers.
So we are about 1 kilometer away, standing in front of the waterfall right now, and you can find a glacier down the hill here, and you can find lots of snow or glaciers at the top and surrounded by clouds. So I'm waiting for my friend. First view of the valley first. So friends, I am walking for about an hour in Valley of Flowers, and we are at 3600 meters altitude. So total time we have covered for around 4.5 hours till now to reach here, and you can see the view. Wow, the clouds are moving and you can easily see them running through the mountains, and there is a big glacier there which is melting and giving you this waterfall.
I trekked for more than 4 kilometers in Valley of Heart, searching for my friends. Then I came to know from the instructor that they have already left from here. So I'm returning from Valley of Heart. So this was the main waterfall which came at the start of Valley of Heart. So you can see the blue water. Actually this water is coming directly from the glacier. You can see. तो ध्रुव कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है अभी? इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग ट्रेक। ऊपर चढ़ते वक्त तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई जितना एक्यूप्रेशर चढ़ते वक्त मिल गया है। अच्छा। So friends, it is 3:35 in the evening now. As you can see on the watch status, we have completed 7 hours 30 minutes and we are at altitude of 3300. और ये स्कीइंग करते हुए और ये बाइकरनी और ये हाँ। तो ध्रुव, कल हमने सुना हेमकुंड साहिब के बारे में काफ़ी डरावनी चीज़ें, खतरनाक रिव्यू मिला था हमको। तो बताएंगे आप कैसा फील कर रहे हैं? बट डर, व्हाट इज डर फॉर मी? नथिंग। धीरज, कुछ बोलना चाहोगे? डर के आगे जीत है। तो क्या डर के आगे घोड़ा है। अच्छा, तो आप यू कैन ऑलवेज गो फॉर घोड़ा। अच्छा